હું પંડ્યા આરતી આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ। ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિની પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ। સાંસદ અને કોંગ્રેસના એઆઈસીસીના સભ્ય શશી થરૂરની પત્રકાર પરિષદ। કોંગ્રેસના ઉમેદવારના પ્રચાર અર્થે પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી। તમામ જે કોંગ્રેસના અગ્રણીઓ છે તેઓ હાજર રહ્યા। કોંગ્રેસના નેતા શશી થરૂરનું નિવેદન। અગાઉના ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ વડોદરા માટે કશું કર્યું નથી। બાદમાં આવેલા હાલના મુખ્યમંત્રી પણ વડોદરા મામલે બોલી ચૂક્યા છે। વડોદરા નગરી સર સયાજીરાવની નગરી છે। અમે દિલ્હીમાં સરકાર બદલવા કેમ્પેનિંગ કરી રહ્યા છે। છેલ્લા 10 વર્ષોથી દિલ્હીની સરકારને કારણે મૂળભૂત અધિકારી મુશ્કેલીમાં છે। આજે ભાજપ પાર્ટીનું જે એક સ્લોગન છે હિન્દુ પાર્ટી અને હિન્દુત્વ, બાબા સાહેબના સંવિધાનને દેશને આગળ વધારવામાં મદદ કરી। સંવિધાન આપણાને સમાન વિકાસનો અધિકાર આપે છે। આજે ગુજરાતમાં બાળકો કુપોષિત છે, જેનો આંકડો વધી રહ્યો છે। સીબીઆઈ, ઈડી અને એજન્સીઓ સરકારના હથિયાર તરીકે કામ કરે છે। ભ્રષ્ટ લોકો ભાજપની વોશિંગ મશીનમાં ધોવાઈને સાફ થઈ રહ્યા છે। ભાજપ સરકારે પ્રતિ વર્ષ 2 કરોડની બાહેધરી આપી હતી, જે 10 વર્ષમાં 20 કરોડ થવા પામે। કોઈના ખાતામાં 15 લાખ આવ્યા નથી। અમિત શાહ બોલી ગયા કે એ જુમલો હતો। ખેડૂતો હવે આપઘાત કરી રહ્યા છે। યુવાનોએ અને મહિલાઓને ન્યાય માટે કોંગ્રેસ કટિબદ્ધ છે। આજે ગુજરાત અને ભારતના યુવાઓ સરકારી પરીક્ષામાં પેપર લીકથી હેરાન છે। કોંગ્રેસ અને ઇન્ડિયા ગઠબંધન આનો નિકાલ લાવીશું। અમારા ઉમેદવાર જસપાલસિંહ તમારી સેવામાં હાજર રહેશે। ભાજપમાં બધા સપનાના સોદાગર છે। ગુજરાતમાં એક પણ યુનિવર્સિટી દેશના ટોપ 10માં નથી, કેમ કે ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ માટે સંખ્યામાં ભણવામાં વિદેશ જાય છે। ત્યારે કેમ આ ગુજરાતના લોકો વધુ વિદેશ જવાની ઘેલછામાં જીવી ગુમાવે છે? કારણ કે ગુજરાતમાં ભાજપે કોઈ સંતોષકારક કામ નથી કર્યું તેવું તેમના દ્વારા બયાન આપવામાં આવ્યું છે। તેમજ કોંગ્રેસના મેનિફેસ્ટોમાં ક્યાંય મુસ્લિમ રિઝર્વેશન નથી। કોંગ્રેસે 65 વર્ષ દેશમાં શાસન કર્યું। 65 વર્ષમાં કોઈનું આરક્ષણ છીનવ્યું નથી। ક્યારેય કોઈના મંગળસૂત્ર કે ભેંસ છીનવી નથી તેવું શશી થરૂર દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે। આવા નિવેદનો આપવામાં આવ્યા છે। इससे ज्यादा वो तो गारंटी है। मैं उससे ज्यादा कैसे बताऊं, क्योंकि अब तो दो चरण हो चुके हैं। 190 सीट में वोट आ गया, बाकी 353 सीट में वोट नहीं हुआ अब तक, होने वाला है और 5 चरण बाकी है। तो उसमें अगर प्रचार अच्छा चला और जो माहौल जो आरंभ हो रहा है उसमें ज़्यादा मोमेंटम भी आ गया, तो शायद हम बहुत सारे जीतेंगे। और शायद अगर भाजपा और जुमला कह के कुछ और बदलेगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। लेकिन मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि जहाँ, जैसे मैंने बताया था अंग्रेजी में, कि पिछले बार जो भाजपा बहुत राज्यों में मैक्स आउट किए थे, उस किस्म के रिजल्ट उनको नहीं मिलने वाला है और उनके सीट के आंकड़े कम हो जाएंगे। अब कितने सीट से कम हो जाएंगे, मैं तो क्रिकेट फैन हूं तो क्रिकेट स्कोर नहीं प्रेडिक्ट करता हूं। राजनेता हूं मैं तो राजनीतिक स्कोर भी नहीं प्रेडिक्ट करूंगा, लेकिन मैं बोलता हूं कि विजय हमारी होगी, क्योंकि भाजपा बहुत इलाके में तकलीफ में है। और ये तकलीफ मेरे ख्याल में, मेरी उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में, आने वाले चरण में आप लोग देखेंगे कि उनके वोट कम हो जा रहे हैं। आपने देखा अभी इस लास्ट 2 फेजेस में कितने सॉलिड बीजेपी एरियाज में लोग नहीं आए वोट करने के लिए। क्यों नहीं आए? क्योंकि उनका तो वो एंथुजियाज्म नहीं है बीजेपी के लिए। वो लोग कहते हैं कि भाई ये सब सुन चुके हैं, कितना सुनेंगे इसी किस्म के भाषण, 10 साल से चुन रहे हैं। तो इसलिए वो लोग कह रहे हैं हम घर पे बैठेंगे। शायद वो लोग नहीं चाहते थे कि कांग्रेस को वोट दे दें, लेकिन वो भाजपा को वोट देना नहीं चाहते थे और से। तो आप ये सब गिन के देख लीजिए। मेरे ख्याल में जो होने वाला है ये इंडिया गठबंधन के लिए अच्छा है और एनडीए के लिए काफ़ी बुरा है। मैंने ये भी अंग्रेजी में कहा था। बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक लोकतंत्र स्थापित किया है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो भाजपा सम्मान नहीं देते, इज्जत नहीं देते हैं। आप सोच लीजिए कि हमारे सिस्टम में कैसा चलना था। जैसे अंबेडकर साहब ने उनके भाषणों में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बताया था, ये स्पिरिट भाजपा बिल्कुल बिट्रे की है। क्योंकि हम अंबेडकर साहब कभी नहीं सोचे होंगे कि ऐसे एक दिन आएगा जहां जो कॉन्स्टिट्यूशन का सुरक्षा करना है वो उनको हर रोज इग्नोर कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं। जो हमारे जो इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, जिनको अपनी ही स्वतंत्रता हो, उनके स्वतंत्रता को छीन लिया है भाजपा ने सब लोगों के। और इसका ये प्रॉब्लम है हमारे देश में कि उसको रुकाने के लिए सिर्फ यही मार्ग है, चुनाव।
उनको हराओ, नहीं तो जो लोग आगे आगे चलेंगे तो संविधान को भी खराब कर देंगे और हमारे देश की जो लोकतंत्रता है उसके साथ जो स्वतंत्रता सब लोग को चाहिए अपनी राय बताने के लिए, आप लोग माध्यमों में आज़ादी से लिखने के लिए या टीवी पे दिखाने के लिए, ये सब हर रोज़ छोटा छोटा हो जा रहा है। आपको मालूम है कितने कितने लोगों के खिलाफ सरकार ने सीबीआई और ईडी और एनआईए और आईटी एक कैसे कहूँ हिंदी में वेपनाइज किया हुआ है, लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया है उनकी राजनीतिक गोल्स के लिए। ये ठीक नहीं है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। तो इस किस्म के एक्शंस हम देख चुके हैं कुछ सालों से और हम नहीं चाहते हैं कि तीसरा मौका भी उन्हें मिले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद करें। ऐसी इन नेताओं से पूछना चाहिए कि वो लोग क्यों जा रहे हैं। सही बात कहूँ तो मेरे मन में ये पार्टी का दोष है या व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, आप उनसे ही पूछना पड़ेगा। मुझे पता है कि जो कुछ सूरत में हुआ था ये बहुत शर्मिंदी बात है। हम अच्छी चीज़ नहीं है कि एक मशहूर बड़ा शहर में हमारे उम्मीदवार नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनसे ही पूछना चाहिए कि वो क्यों नहीं लड़ना चाहते थे, या अगर वो लड़ना चाहते हैं उनका फॉर्म गलती किया तो क्यों वो कुछ प्रोटेस्ट नहीं करते। हम तो अभी इस विषय पे तो मेरे ख्याल में कुछ चर्चा होने वाली है और कोई जांच भी होने वाली है, इन्वेस्टिगेशन हो जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। और इंदौर में जैसे आपने कहा एक ही चीज़ हो, पूरी में तो बात अलग थी। हमारी उम्मीदवार ने कहा कि देखिए मुझे पार्टी से पैसे नहीं मिल रहा था एक क्रेडिबल एफर्ट बनाने के लिए, और पैसे की बात मुझे मालूम है, मैं भी उम्मीदवार था पिछले हफ्ते तक। हमारे चुनाव तो 26 अप्रैल में था, 26 अप्रैल में, कि पार्टी को जितने पैसे की ज़रूरत है हर उम्मीदवार को देने के लिए मुश्किल है। आपको पता है कि सरकार हमारे अकाउंट्स को फ्रीज भी, एक बड़ा अकाउंट को फ्रीज के 139 करोड़ वो लोग पकड़ के रखे हैं। तो ये सब छोटी छोटी बात नहीं है। उम्मीदवारों को पूरा समर्थन देने के लिए पैसे की भी ज़रूरत है। इस केस में मुझे पता नहीं कि ये क्यों हुआ है कि दूसरों तो काफ़ी कॉन्फिडेंस से लड़ रहे हैं और वो वापस ले रहे हैं उनके टिकट, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस विषय पे शायद दूसरे विषय भी होंगे, दूसरे सोच भी होंगे, लेकिन पैसे की बात शायद सही है कि जितने कांग्रेस पार्टी दे सके वो काफ़ी नहीं था उनके लिए। नहीं, वो लवली साहब का विषय तो आपको मालूम है, उन्हें खुद बताया क्यों। वो तो दिल्ली का एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है कि आपको पता है कि हमारे जो इंडिया अलायंस है, आम आदमी पार्टी के हम साथ हैं गुजरात में, हम साथ हैं दिल्ली में, लेकिन हम साथ में नहीं है पंजाब में, और ऐसे एक दो जगह में कुछ फ़र्क है दोनों पार्टी के बीच में, और हमारे कुछ नेताओं इससे बहुत खुश नहीं है, और उसी विषय पे उसने इस्तीफा दिया था पार्टी से। लेकिन पार्टी से नहीं, माफ़ कीजिए, उनके स्थान से। वो कह रहा है कि वो पार्टी में रहेगा, लेकिन वो स्थान से इस्तीफा दिया क्योंकि वो पसंद नहीं करता था इस पर्टिकुलर विषय पे। देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी में सब लोगों को संतुष्ट करना नामुमकिन है। आपको शायद मालूम है कि 2 सिटिंग एमपी भाजपा का, एक हरियाणा में एक बिहार में, उनके पार्टी छोड़ के हमारे पार्टी आ गए। 2 सिटिंग एमपी, और उनको टिकट भी नहीं दिया, फिर भी वो लोग आए। तो चुनाव में ऐसे आना जाना हो जाता है भाई, इसमें तो कंप्लीट आश्चर्य की कोई बात नहीं है। और हमारे तमिलनाडु में मैंने देखा कि बीजेपी का SC/ST सेल का अध्यक्ष भाजपा छोड़ के दूसरे पार्टी में चले गए तमिलनाडु में। तो ये सब होते हैं, हर पार्टी को होते हैं, लेकिन जब हमारे पार्टी में ऐसे होते हैं, आप लोग बहुत बड़े हेडलाइंस देते हैं। क्या ये जस्ट है? मुझे मालूम है। Good afternoon, everyone. Very, very pleased to be here in Vadodara. It's a city I've been very much wanting to visit, but sadly, in these circumstances, this doesn't really count. I'm here to see you all and go back to Ahmedabad this evening. But I will be back. It's a city that I had very, very high expectations of, but sadly, as I have again been reminded, it has not been developing as we had all hoped. I think 10.5 years ago, the then Chief Minister, Mr. Modi, pointed out that Baroda has not developed properly and that he was going to be the candidate who would develop it. 10 years later, the current Chief Minister has made the same comment, that the city has not developed.
which does not suggest that you had the kind of progress the people of this wonderful city deserve. We're in a hotel named for the great Maharaja, Sayaji Rao. He is a man who, as you know, amongst many accomplishments for the city, he also gave a great gift to the nation of giving a scholarship to Dr. Ambedkar. And this historic legacy is also part of the pride of the city, and I'm very honored to be here in front of all of you. Today, I'm here because we are campaigning to change the government in Delhi. And the reason that we need to do this is something that perhaps here in Gujarat, I need to remind you also. We need to do this because today we are in a situation where the very idea of India, the Indian democracy that our forefathers fought for, is in peril. We have a government in Delhi for the last 10 years that has seriously challenged every basic principle for which the freedom struggle had fought. We fought for a country where everyone, irrespective of what your caste was, your religion was, your language was, your state was, you would all be equal. Everyone would enjoy the benefits of Indian citizenship. Today, we have an India where, unfortunately, the ruling party's slogan is Hindi, Hindutva, Hindustan. And there are large parts of the country which are not embraced by the slogan. In fact, in the last 10 days, we have seen our Prime Minister using language that no one would have dreamt a Prime Minister would use against 200 million of his own citizens. We have also seen, frankly, in our country, the hollowing out of the democratic institutions so proudly established by Dr. Ambedkar's constitution. A constitution which gave us free, autonomous institutions whose autonomy has now been hollowed out by the BJP. A constitution that gave us a parliament which the BJP has now attempted to reduce to a notice board or a rubber stamp for its decisions. A constitution that gave us a government that was meant to be responsive to the people and to develop the country equally. But sadly, we are seeing a government that only works for a few and that neglects the many. Even Gujarat, the state of our Prime Minister and Home Minister, has amongst the highest malnutrition rates in the country. Our children in Gujarat are stunted. We are seeing shocking figures for how poorly our children in Gujarat are nourished. This is because the neglect of the common man, the common child, the common person is rampant and widespread here. We are seeing that in this constitution, we wanted to have all the checks and balances so that no government could become too powerful and that the government of the day would be accountable to the people. But this government has changed all that. They have created an atmosphere of fear where people are afraid to speak on the telephone because they don't know whether the government is listening. Where the agencies like the CBI, the ED, the NIA, the IT department have all been weaponized to use against the critics of the government. And where corruption has now become an instrument of coercion for the BJP, that they can use it to persuade those who are accused of corruption to become clean by joining the BJP, the notorious BJP washing machine. These are just some of the conditions that we are fighting to change in this country. On top of that, we are concerned that this government has not kept any of its promises to the Indian people made in the last 10 years. They promised 2 crore jobs a year. Where have those jobs gone? Today, since 2014, we have seen a net loss of 1 crore jobs rather than an increase of 20 crore. They promised every Indian would get 15 lakhs in his bank account by bringing black money back from Switzerland. Have any of you seen that money? Have any of you got your 15 lakhs? Please tell me if you have, because we don't know anybody who's got that. Mr. Amit Shah said that's only a jumla.
But then the Modi ki guarantee is that every guarantee is a jumla. That there is no guarantee that is kept. Farmers' incomes were supposed to be doubled. Is there any farmer in this country whose income has doubled in the last 10 years? In fact, the sad truth is 80% of our population has seen a decline in its incomes. So we want to create a government that cares for you, that cares for the ordinary people of this country, and that seeks to bring development to all. We have promised 5 Nyayas, including particular focus of Nyay for Mahila and Nyay for Yuva. I speak of them because these are important constituencies neglected in many parts of the country and particularly in Gujarat. We are seeing the difficult condition of women in Gujarat. We want to cater to their needs, particularly those who are not participating in the joyful life that Mr. Modi talks, the Achhe Din that he promised us. We have seen the challenges faced by Yuva. The youth of Gujarat and of India are victims of everything from paper leaks when exams take place to unemployment when they pass exams and seek jobs, when they look for jobs, there are no jobs to be had.